Hey, so let's look at what I mentioned yesterday. Wanted to look for shorting opportunities once this high was broken. Why did I not go and short? See, the reason being I didn't really like the structure in the morning. One was there were no volumes, so for me to decide what could happen. And second is if you look at 1 hour close, which is here, candles are not even closing below 10 moving average. Have not touched VWAP, not closing below 10 moving average. So I wanted to wait till it closes, and that happened only at 10:45. By then I got a system trade in the morning, which I don't usually share. So this was basically that it won't really go down, and stop loss becomes VWAP if I'm going long, which I did. I bought this around 562 levels, stop loss being 530 levels, 53, yeah. So I bought it around 11:15. Stop loss was 540, 20 point stop loss. I took a exit, 50% exit at 50 points, and then in the afternoon I shared a system trade, usually share it on my social channels, which predicted this move. The only thing is it did not get triggered at timely, so the system trade was buy Nifty at 580 levels, which is basically 10 moving average at that time. So 570, 580 levels, stop loss VWAP, looking for a new high, which is what happened. It came to 10 moving average and it gave you a new high. So that is the reason I only booked 50% here, and rest 50% I booked the at close, so 6 to 7. So this was my trade. I'm showing this because of the validation that I actually went long here. So yep, this is today's. I don't really like the structure of this. No volumes at all. So let's see. Hoping this to be taken out quickly in the coming, probably even tomorrow. Can't say. So what is my plan for tomorrow, and what is my plan for positional put options? Because this is the range I was looking to buy options, put options. So I am looking for position put options, not today, after 10 o'clock tomorrow, because I think premium should drop after 10 o'clock tomorrow. So if the prices are not already below VWAP, let's see. Second is, what is my plan? I'll only look for shorts tomorrow after 10, based on how the structure is. So it's really easy to say I'm going to look for shorting opportunities or buying opportunities. The structure also should match those predictions. So example being today, I wanted to short, but the structure did not really look like a shorting structure, hence went long, hence the reason I'm showing this. So I'm still predicting a good shorting opportunity tomorrow. If price is near high or is above VWAP, I will look for even buying puts, but let's see, positionally, and also look for intraday shorts tomorrow. Did not really trade BankNifty. Thank you. मैं कल का डिस्कस कर, कल मेरा प्लान ये था कि अगर आज का हाई टूटेगा तो मैं 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा. वो मैंने नहीं किया. उसके 2 रीज़न है. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये VWAP टच नहीं करा या 10 MA के नीचे क्लोज नहीं हुआ तो ये हमेशा लॉन्ग रहेगा. एक तो ये वॉल्यूम्स नहीं है, जो मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ मोस्टली ओपन. लेकिन इस बार अगर आप देखें तो मैं जो प्रेडिक्शन था वो एक रीज़न की वजह से था, क्योंकि वो एक जोन पे आ गया था जिस जोन में मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहता था. इसलिए मैंने वो बताया था कि मैं शॉर्टिंग करना चाहूँगा वहाँ पर. लेकिन अगर आप देखें तो 10:45 तक तो ये ना 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, ना VWAP टच किया है इसने. तो एक डाउट सा था, लेकिन तब भी मैं शॉर्ट करता इसको अगर मेरा सिस्टम ट्रेड नहीं आता. मेरा सिस्टम ट्रेड आया जो बेसिकली बोल रहा था कि मोस्टली अपसाइड ही रहेगा, और स्टॉप लॉस VWAP था. तो मैंने ये ट्रेड लिए हैं. उसमें 562 पे एंट्री की थी मैंने. स्टॉप लॉस था 540, उस टाइम का VWAP 540, 534 शायद हाई का नशी का VWAP, हाँ 534, और जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स है. और 50% मैंने 610 पे बुक कर दिया था. और मैंने बाकी इसलिए बुक नहीं की क्योंकि मैंने एक सिस्टम ट्रेड दिया था अराउंड 1 o'clock शायद 12:45 कि ये मैं चाहता था ये 10 मूविंग एवरेज के आसपास आए, लेकिन मैं चाहता था 115 तक आए, जो कि नहीं हुआ. इसलिए मैं इसको ट्रिगर नहीं मानूंगा. लेकिन बेसिकली ये प्रेडिक्ट करा. ये मोस्टली स्ट्रक्चर उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला है 580 के आसपास या 570 वैल्यू भी बताई है मैंने, और ये 583 आया है, और 583 से उसने नया हाई दिया है जो कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स है. तो ये बेसिकली उसने उस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था मैंने, तो इसलिए मैंने उसको बुक नहीं किया. 50% मैंने फिर बाकी एंड ऑफ डे जब क्लोजिंग हुई तब बुक किया. अब मैं कल क्या कर रहा हूँ,
ये जोन में, अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो ये जोन के लिए मैं वेट कर रहा था पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए। तो मैं कल देखूँगा 10 o'clock के बाद। आज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 10 o'clock इवेंट है और उसके बाद प्रीमियम्स कम हो सकते हैं। तो मैं देखूँगा यहाँ 10 o'clock के बाद, अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो करूँगा। प्रेडिक्ट करना आसान होता है, जैसे आज भी मैंने प्रेडिक्ट किया था शॉर्टिंग करने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो मैं रिवर्स हो गया। वो एक स्ट्रेंथ है, वही एक स्ट्रेंथ चाहिए अगर आपको सर्वाइव करना है मार्केट में। क्योंकि मैंने बोला है कि मैं शॉर्ट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो रहा हो मार्केट में मैं शॉर्ट करूँगा जाके। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा, तो मैं कल भी मैं देखूँगा क्या हो रहा है 10 बजे। अगर ये मार्केट यहाँ पे खड़ा है 10 बजे तो मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता, उसको ऊपर आने दूँगा फिर शॉर्ट करूँगा। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, तो पर मैं इस जोन में पक्का शॉर्ट के लिए देखूँगा हीरो ज़ीरो। और इंट्राडे भी मोस्टली शॉर्ट्स ही देखूँगा, पर 10 o'clock के बाद ही देखूँगा क्योंकि कल इवेंट है, तो इसलिए मैं प्रेडिक्ट करना चाहता नहीं हूँ अभी। थैंक यू।